when we start making a state-based tree, तो we can easily understand कि हमने कौन सा एलिमेंट इंक्लूड किया है एंड कौन सा एलिमेंट हमने एक्सक्लूड किया, ठीक है. एंड फ्रॉम दैट we can easily make a subset from a set and we start counting making addition of all the elements. हम जितना subset में जितने elements हैं उनको ऐड करेंगे, उनको ऐड करने के बाद देखेंगे अगर वो एडिशन एक पर्टिकुलर x नंबर के बराबर आ जाता है तो हमारा एक सबसेट तैयार हो गया, ठीक है. ऐसे हम आगे करते जाएंगे और जितने नंबर ऑफ सबसेट हमें तैयार होते हैं हम वो काउंट करेंगे कितने सबसेट बन गए एंड गिव द रिजल्ट ऑफ इट. और एक मेन चीज क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हम सेट में रखेंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, जैसे 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20 in such a way, ठीक है. So if we review again, so what we did is that कि हमने देखा कि sum of subset क्या प्रॉब्लम है. sum of subset है कि is to find the subset sub of the given set S with the element S1, S2 up till Sn, where the element of set S are n positive integers. तो जितने भी हमारे सेट में नंबर्स होंगे वो सारे n पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होंगे. नो नेगेटिव नंबर शुड बी देयर इन द सेट. सेट में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होगा. सच अ मैनर दैट व्हाटएवर जो भी हम सबसेट तैयार करें वो सबसेट बिलोंग करेगा सेट S को. इसका मतलब यह है जितने भी एलिमेंट हमारे सबसेट में होंगे वो वही एलिमेंट होंगे जो एलिमेंट सेट में गिवन होंगे, ठीक है. The sum of elements of subset sub is equal to some positive integer number. और जो सा हम सबसेट हम तैयार करेंगे उस सबसेट में जितने भी हमने इंटीजर्स लिए हैं उनको अब जब हम ऐड करेंगे वो कोई गिवन x नंबर हो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है. The solution would be cycle throughout all the subset of n numbers. क्योंकि हमारे पास अगर n नंबर्स है एक सेट में तो हमने देखा कि हमको 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट तैयार करने पड़ेंगे. That is a very high time consuming concept. So to इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बैक ट्रैकिंग टेक्निक, ठीक है. और इसमें क्या है, वी यूज टू स्पेशल नंबर्स 0 and 1. 0 मीन्स कि हमने जो एलिमेंट है सेट S में से उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है. 1 मीन्स जो सा नंबर है एलिमेंट सेट S है उसको हमने हमारे सबसेट में ऐड कर लिया है, ठीक है. सो इंक्लूड मीन्स 1, द करंट आइटम इन द सबसेट is added from set to our subset, and exclude means the item from set is not included in our subset. हमने अपने सबसेट में एलिमेंट को ऐड नहीं किया जो एलिमेंट सेट में था, ठीक है. एंड वी यूज द बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट ओवर हियर. इसमें हम बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेट बेस्ड ट्री बनाएंगे, ठीक है. एंड जितने भी एलिमेंट होंगे ए सेट में वो एलिमेंट सारे एक अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए. सो दीज आर द स्लाइड्स सो फार वी हैव डन. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस 5 concepts so far. Let's move further. Okay. जब हमने ट्री बना ली, जब हमने स्टार्ट की ट्री बनानी स्टेट बेस्ड ट्री, सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एलिमेंट हमने ऐड करना कौन सा एलिमेंट नहीं ऐड करना. सो व्हेन एवर वी स्टार्ट मेकिंग अ ट्री, जब भी हम ट्री स्टार्ट करेंगे ट्री का कोई ना कोई रूट होगा, ठीक है. द लेफ्ट साइड इंडिकेट्स दैट हमने उसको इंक्लूड कर लिया एंड राइट साइड इंडिकेट्स कि हमने उसको एक्सक्लूड कर लिया, ठीक है. सो नोड की जब लेफ्ट साइड है वहां पे हम लिखेंगे 1 और जो सी राइट साइड है वहां पे हम लिखेंगे 0, ठीक है. 1 का मतलब ये है कि हमने एलिमेंट जो है एक सेट में था वो एलिमेंट हमने सेट से उठा के अपने सबसेट में डाल दिया, दैट इज 1, ठीक है. एंड 0 मीन्स जो सा हमने एलिमेंट सेट में से उठाया था वो एलिमेंट को हमने अपने सबसेट में ऐड नहीं किया. The element we selected from the set, we did not include it in our subset, we just excluded it. हमने उसको अपने सबसेट में डाला नहीं, उसको अपने सबसेट से बाहर निकाल दिया. So whenever we make a tree, जब हम ट्री बनाएंगे ये ध्यान रखना आपने कि left side indicate that we have added the element in the subset and right side indicate we have rejected the element. So you have to write 1 on left side and 0 on right side whenever you make the stage based tree, ठीक है. जब हम आगे बनाएंगे एग्जांपल करेंगे इसकी, सो आई विल शो यू कि हाउ यू हैव टू डू इट, कैसे आप करना है, ठीक है. द राइट चाइल्ड ऑफ द रूट
indicates that we have a node included, and the left side of the node say that we have included the element of set in our subset. ठीक है? Each node store a total of partial solution of elements. जैसे जैसे हम आगे ट्री के आगे नोड बाय नोड बढ़ते जाएंगे, वो नोड क्या है एडिशन करती जाएगी प्रीवियस नोड का भी. ठीक है, क्योंकि वो एडिशन करेंगे इसका हमें चल जाएगा पता कि हमारे सबसेट में जो वैल्यूज है उसका सम कितना बना है. जब हम एडिशन करेंगे, फ्रॉम दैट एडिशन वी विल फाइंड दैट द एडिशन ऑफ ऑल दैट नोड्स इज इक्वल टू द इंटीजर एक्स और नॉट. ठीक है, उसका उसका फायदा ये है. ओके, हाँ जी, एनी प्रॉब्लम सो फार? किसी को कुछ ना समझ लगा अभी तक तो आई कैन रिपीट इट अगेन. हाँ जी, एनीवन, अगर इफ एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम ही और शी कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स. अगर प्रॉब्लम है जस्ट मेंशन मी, अगर नहीं है तो जस्ट राइट नो इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन मूव फर्दर. हाँ जी बच्चे. ओके, okay, if at any stage the partial solution element sum is equal to x. क्या कोई ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे जो सा हमने सबसेट बनाया है वो सबसेट के एलिमेंट्स के एडिशन है वो इंटीजर s के बराबर आ जाता है, वो स्टॉप ओवर देयर, उस सबसेट को हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे. ठीक है, और हम कहेंगे कि हमारा एक सबसेट तैयार हो गया. ठीक है, सो वी टर्मिनेट दैट सबसेट ओवर देयर एंड स्टार्ट मेकिंग द न्यू सबसेट. फिर हम एक नया सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे कि और कितने सबसेट हम बना सकते हैं फ्रॉम दैट सेट दैट गिव अस द टोटल ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एक्स. कि जितने भी एलिमेंट उस सबसेट में हैं जब हम उसको ऐड करें वो एक्स नंबर के बराबर आ जाए. ठीक है, सो द डेड एंड in the tree appears only when either of the two inequalities exist. डेड एंड कब आएगा कि हम ट्री को कहाँ जाके स्टॉप कर देंगे. दो चीजें होगी, या तो ये होगा कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे सबसेट में हैं जो सो गिवन एलिमेंट एक्स है या उससे कम है या उससे ज्यादा है. ठीक है, कि हमारा सबसेट तैयार हो गया और एलिमेंट बचे नहीं है सेट में. जब हमने सारे एलिमेंट्स को ऐड किया अपने सबसेट के एलिमेंट्स को, तो या तो हमारा जो एडिशन है सारे एलिमेंट्स का वो गिवन एलिमेंट एक्स से ज्यादा होगा या कम होगा. ठीक है, इनमें से कोई भी स्टेज आएगी तो हम क्या करेंगे, हमको वहीं पे स्टॉप कर देंगे कि इस मतलब हमारा आगे सोल्यूशन नहीं आने वाला. ठीक है, सो बिफोर मूविंग द एल्गोरिथम लेट अस सी कि आपको अभी तक कितना समझ आया. ठीक है, सो जस्ट वेट, लेट मी गिव यू वन पोल. ठीक है, only with the help of poll I can understand ki how much you have understand. Read it and give the answer. I'm going to launch it now.
So as per the percentage of the result of the first poll, so I'm also satisfied that you are listening to the topic. Okay, I'm going to close it now. Thank you. Okay. Question was the sum of subset problem in which of the possibilities are correct that include 1, exclude 0, exclude 0, include 1. So as per this 4 conditions, so we said that 1 indicates that we included and 0 indicates that we have excluded. So option 1 will be the answer of it. Okay. So let's check one more condition. Okay. Again, read the question carefully, and after second poll, we move further. So I'm going to launch it now. किसी टाइम भी आपको लगे मेरी आवाज साफ नहीं आ रही, just to tell me. ठीक है. So I'm going to launch it now. Okay, come on, students. Read the question carefully, read the answer carefully, then select the option, submit it. ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से आंसर पढ़िए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए. Okay, it's last 5 seconds. So that I'm going to close it now. Anyone want to give answer of it? He or she can give. Okay. Thank you very much. Sorry. So while designing the state-based tree, which of the statement is true? The left side of the node indicates that we have included the element from the set S in our subset. The right child of the node indicates that we have not included the element from set in our subset. So both of the conditions are true. It means it will become all of the above. Okay. So I think 50% student have given the correct answer of it. So again, I want to say that कि ध्यान से सारी ऑप्शन को पढ़िए, आराम से पढ़िए इसको, उसको 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद then give the answer. ठीक है. So in this case, the first option was right, no doubt, and second option was also right, no doubt. Okay. And so
but the answer is the third option, that is all of above. Okay, so let's move further. So far we understand that what is a subset, how we create a subset, what is the condition of making a subset. Okay, how we can use the backtracking in the subset. If we don't use the backtracking in the subset, then what is the time complexity of that. Okay, and while making us this creating a subset, how we can use state based tree. हम state based tree को कैसे use कर सकते हैं, हमने सबसेट कैसे बनाना है, कौन सी कंडीशन लगा के सबसेट बनाना है. ठीक है, और अगर सबसेट नहीं बन रहा तो उनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो वो एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट इज लेस देन दैट गिवन इंटीजर x, और एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट इज ग्रेटर देन द एलिमेंट x. ठीक है, अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब हमारा सबसेट तैयार नहीं हो पा रहा. और अगर एलिमेंट्स ऑफ सबसेट एडिशन इज इक्वल टू x, हमारा सबसेट तैयार हो गया. ठीक है, सो इसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने हैं कि कितने सबसेट हम तैयार कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेट से दैट फुलफिल द कंडीशन. कंडीशन क्या है कि एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सबसेट शुड बी इक्वल टू द इंटीजर x. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन create a subset from a given set using the sum of subset problems. Okay, so we having a algorithm of sum of subset that S is a set of n numbers and M is the expected sum of subset elements of subset. M क्या है? M वो number है जो हम चाहते हैं कि जब ऐड करें हम सबसेट के एलिमेंट्स को, that should be equal to M. ठीक है, so start with an empty subset, add to the subset में हमने add किया the next element from the list or set. If the subset is having some m, then stop that subset as a solution. क्योंकि हमने subset में element add किया था, add करने के बाद हम देखा कि हमें जो आंसर था मिल गया, वो equal to m आ गया, वहीं पर stop कर देंगे. If subset is not feasible or if we have not reached the end of the set, then backtrack through the subset until we find the most suitable value. अगर हमारे सबसेट की वैल्यू क्या है इंक्रीज कर जाती है आपसे, हम वहीं पर रुक जाएंगे और वापस जाएंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे. ठीक है, और जौन सा हमने लास्ट नंबर ऐड किया था उसको रिजेक्ट करके उसका अगला नंबर ऐड करेंगे, फिर काउंट करेंगे क्या उसका इक्वल टू m आ गया. इफ सबसेट इज फिजिबल देन रिपीट स्टेप 2. if we have visited all the elements without finding the suitable subset, and if no backtracking is possible, then stop without solution. हमने सारे सेट्स बना के देख लिए, हमें कोई भी ऐसा सेट सबसेट नहीं मिला जिसमें हमारा सॉल्यूशन फाइंड हो रहा है, तो हम स्टॉप कर देंगे अपना प्रोसेस. ठीक है, so if we use the concept of backtracking, so what we find that some time complexity is reduced from 2 the power n to n into sum. ठीक है, so ये एक एक्सपोनेंशियल से हटके पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया. ठीक है, that n is a number of element and sum is what a total addition should be. ठीक है, so इसकी टाइम complexity भी कम हो गई if we use the concept of backtracking. So using this algorithm we are going to solve the problem. So what problem is this? This is one of the problem over here. ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक सबसेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 20, 22, 23, 25, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स इसमें. ठीक है, and you can see that all elements are in increasing order. If you check this one, ठीक है, all elements are in increasing order. ठीक है, and there are 6 elements. And total should be 50. जब मैं अपने सबसेट के एलिमेंट्स को ऐड करूं तो उसका टोटल 50 के बराबर आना चाहिए. ठीक है, so what example is, in example we have a set of weight w1 w2 w3 up till wn, n number of elements का हमने weight हमने मेंशन करना है, and we have to make subset, हमने subset तैयार करने हैं of those weights w1 w2 w3 and so forth. All right, over w3. ठीक है,
such that the sum of weights is equal to 50. Sum of weights of subset is equal to 50. ये जब मैं उस सबसेट के वेट्स का मैं ऐड करूँ, एडिशन करूँ, तो इक्वल टू 50 आना चाहिए मेरे पास. ठीक है. इफ आई इंक्लूड द वेट WI, right, if I include the weight, let's say WI, ठीक है, WI from set, ठीक है, I will take it as 1, ठीक है, that WI is equal to 1. If I exclude the weight WI, ठीक है, from the set S, I will take it as 0. अगर उसको इंक्लूड करूंगा तो 1 ले लूंगा, अगर उसको एक्सक्लूड करूंगा उसको 0 ले लूंगा. ठीक है. So I am having a set WI that is of 5, 20, 22, 23, 25 and 28. So I am having 6 elements in my set. ठीक है. And all are arranged in increasing order, as you can see. आप देख सकते हैं इसमें. And my condition is कि जो सा भी मैं सबसेट तैयार करूं, उसमें चाहे जितने मर्जी नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने मर्जी नंबर उस सबसेट में आए, उन सबसेट के एलिमेंट्स का जो एडिशन है वो 50 के बराबर होना चाहिए. ठीक है. सो n is the number of elements in a set. M is the required sum of weights. If I make sum of all weights, it is not equal to 50. The sum of subset is to find maximum number of subsets. So the thing is maximum number of subsets. So it is not a optimization problem. It is a maximization problem. ठीक है. So it can be also one of the question you can get in your 2 marks, whether it's optimization or maximization problem. ठीक है. Of those weights such that the number of weights is equal to M. ठीक है. So let's start. We'll start our concept from here. ठीक है. Again, to find the weight of subset is equal to 50. We draw binary tree because it may have either yes or no, 2 sides. ठीक है. And with the binary tree, we'll find whether the weight is included or excluded. If the collection of weight have sum equal to 50, it will become one set. हमें एक set मिल जाएगा. Using binary tree or state space tree, we will find the maximum number of subset. जितने भी number of subset हम बना सकते हैं, हम उतने subset बनाएंगे. ठीक है. WI is the weight of sets having six element, 5, 20, 22, 23, 25, 28. And मैंने अब इस सेट में से सबसेट तैयार करने हैं. इस तरह सबसेट तैयार करना है कि जो मैं सबसेट तैयार करूंगा, उस सबसेट के अंदर जो से भी एलिमेंट होंगे, जब उन सारे एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा तो उसकी एडिशन जो है 50 की इक्वल होनी चाहिए. इक्वल, इट शुड बी इक्वल टू 50. ठीक है. लेट्स इंक्लूड द फर्स्ट वेट W1. W1 क्या है? 5. ठीक है. मैंने पहला एलिमेंट इनिशियली व्हाट इज इनिशियली, ये जो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जब मैंने 5 + 20 + 1 22 + 23 + 25 + 28, इन सबको मैंने जब ऐड किया, इन सब का टोटल कितना बनता है? 123. ठीक है. सो टोटल वेट इज 123 एंड इन वन नोड आई हैव रिटन 2 वैल्यूज. आप देखोगे इसमें मैंने जो रूट नोड है, इसमें मैंने 2 लिखी वैल्यू, 0 और 123. 0 मीन्स अभी तक मैंने कोई सबसेट तैयार नहीं किया. ठीक है. किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं किया. ठीक है. सो 0 एलिमेंट इज इन माय सबसेट सो फार एंड टोटल वेट ऑफ द सेट इज 123. ठीक है. क्लियर है? 0 मीन्स अभी तक मैंने अपने सबसेट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी, कोई वेट ऐड नहीं किया, और टोटल का टोटल वेट 123 है, 123 ही पड़ा है. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to find the total weight. DAGST is equal to you can say 5 plus 20 plus 22 plus 23 plus 25 plus 28, and when you make addition of it,
it will be equal to 1 2 3. ठीक है, तो हाँ जी, let's start. I include the first element in my subset. मैंने अपने सबसेट में पहला एलिमेंट को ऐड किया. ठीक है, so you can see on the left side w1 is equal to 1. 1 means I have added the first weight in my subset. first weight क्या है? 5. ठीक है, 5 को मैंने अपने सबसेट में ऐड कर लिया. जब मैंने 5 को सबसेट में ऐड किया, इट मींस टोटल वेट में से 5 मैं कर दूंगा माइनस. ठीक है, टोटल वेट कितना था? टोटल वेट इज व्हाट? 123. ठीक है, अब इसमें से मैंने 5 निकाल दिया, कितना रह गया? 118. ठीक है, बिकॉज अब सेट में वेट था 123, 5 मैंने निकाल लिया, इसमें कितना रह गया? 118. ठीक है, सो यू कैन सी दैट इन द स्टेट बेस ट्री मैंने वहां पे लिख दिया कि आई हैव इंक्लूडेड एलिमेंट 5 फ्रॉम सेट एस टू माई सबसेट. ठीक है, और रिमेनिंग वेट कितना रह गया? 118. मेरे पास अभी भी 118 वेट पड़ा है अपना सबसेट तैयार करने के लिए. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. करंट वेट इज 5. करंट वेट जो मेरे सबसेट का वो 5 है. ठीक है, एंड रिक्वायर्ड वेट इज 50. अब मेरे को बनाना कितना वेट है? 50. ठीक है, लेट्स इंक्लूड द सेकंड वेट फ्रॉम सेट टू माय सबसेट. मैंने अपने सबसेट में सेकंड वेट इंक्लूड किया. सो यू कैन सी ओवर हियर इन द स्टेट स्पेस डायग्राम, जहाँ पे w2 इक्वल टू 1 लिख दिया मैंने. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आई हैव इंक्लूडेड द सेकंड वेट इनटू माय सबसेट. जब उसको मैंने इंक्लूड किया, सेकंड वेट क्या था? 20. सेकंड वेट इज 20. सो पहले मेरे पास क्या था? 5. सो 5 प्लस 20 कितना बन गया? 25. ठीक है, सो नाउ आई रिड्यूस 20 फ्रॉम 118. 118 से मैंने 20 रिड्यूस किया, मेरे पास क्या रह गया? 98. ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज क्लियर? ठीक है, सो currently now in my subset the weight is 25. ठीक है, total weight, and required weight is 50. ठीक है, एंड द पेंडिंग वेट इन माय सेट इज 98. अभी भी मेरे पास 98 वेट पड़ा है जिसमें से मैं अपना वेट उठा सकता हूँ. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. करंट वेट इज 25, रिक्वायर्ड वेट इज 50. ठीक है, करंट वेट क्या है? अब मेरे करंट वेट क्या है? मेरे इसमें सबसेट में 25 है और मेरे को चाहिए कितना? 50. ठीक है, सो इंक्लूड थर्ड वेट. मैं बोलता हूँ थर्ड वेट में मैं उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ इन माय सबसेट फ्रॉम द सेट. ठीक है, सो करंट वेट क्या है? W1 W2. W1 और W2 मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं मेरे सबसेट में. ठीक है, सो आई इंक्लूड W3 इन माय दिस वन. इसको मैंने इसमें ऐड कर लिया. ठीक है, सो इफ आई इंक्लूड इट, इट विल बिकम व्हाट इज नेक्स्ट? 22. 22 बन गया. ठीक है, 22 इसको मैंने ऐड किया तो ये बन गया 47. ठीक है, स्टिल नॉट इक्वल टू 47. If the sum of the previous weight and the current weight is greater than m, that is 50, stop and try another weight. ठीक है, अभी तो क्या ये 47 है, मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकता. ठीक है, so I add the next weight over here. ठीक है, यहाँ पे let's see what the next slide is. Okay, चलो अब तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे. what I have done is basically यहाँ पे मेरे को एक और ऐड करना चाहिए था, so I will add it. Let me add it. ठीक है, 47 हो गया. ठीक है, स्टिल नॉट इक्वल टू 50. 50 के बराबर नहीं आया. ठीक है, व्हाट आई डू इज क्या वैल्यू चेंज करते हैं थोड़ी सी. अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक होगी वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे एक स्लाइड मैंने मिस कर दी बीच में से. एनी हाउ, सो 47 इज देयर, स्टिल 47 लेस देन 50. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज I add one more weight over here. ठीक है,
let's see, I add one more weight over here. Okay, that weight is, let's say, see, W4 equal to W4. ठीक है, मैंने ऐड W4 क्या 23. ठीक है, इसमें जब 23 में ऐड करूंगा ये कितना बन जाएगा, नियरली अबाउट 70. ठीक है, सो आई कैन नॉट इंक्लूड इट. इसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा. रिमेनिंग क्या रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा मेरे पास 53. सो आई कैन नॉट ऐड W4 इन इट. W4 को मैं इसमें ऐड नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज वेट, सम ऑफ वेट, प्रीवियस वेट एंड करंट वेट इज ग्रेटर देन m. ठीक है, जो जब मैंने करंट वेट को ऐड किया, करंट वेट क्या था 23, प्रीवियस वेट क्या था 47, जब दोनों को मैंने ऐड किया ये बन गया 70 एंड इट इज ग्रेटर देन 50. आई कैन नॉट ऐड इट. इसको मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा. सो व्हाट आई डू इज आई क्रॉस ओवर हियर. आई पुट क्रॉस ओवर हियर कि मैं इसको ऐड नहीं करूंगा. ठीक है, आई राइट क्रॉस ओवर हियर दैट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड इट. ठीक है, क्लियर है. सो इसका मतलब when I move to next slide, so basically so I have missed once. वहाँ पे मैंने 47 कर दिया ना, एक साइड वहाँ पे और आई थी, तो वहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया. तो what I do is I reject the W3. मैं W3 को रिजेक्ट कर दिया. लेट्स से कि W3 ऐड करने के बाद 47 हो जाता है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट ऐड करूंगा वो उससे बढ़ जाएगा. ठीक है, मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया. मैंने कहा मैं W3 भी नहीं लेता. ठीक है, मैं वेट W3 भी नहीं लूंगा. ठीक है, सो आई राइट W3 इज एक्सक्लूडेड. W3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, मैंने बोला कि मैं W3 को काउंट नहीं करूंगा. तो मेरा वेट 25 था इस वक्त. ठीक है, क्योंकि 98 में से W3 तो निकल चुका है. ठीक है, तो 76 तो वहाँ ऐसा रहेगा, बिकॉज W3 वेट को मैंने सेट में से सेट में से निकाल लिया, मगर मैंने उसको यूज नहीं किया. सेट में से निकाल तो लिया ना, जब निकाल लिया तो मेरे पास सेट में क्या रह जाएगा, 76 वेट रह जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज इंक्लूड फोर्थ वेट. मैंने बोला कि मैं फोर्थ वेट इंक्लूड करता हूँ 25 में. ठीक है, 25 में जब मैंने फोर्थ वेट इंक्लूड किया, फोर्थ वेट क्या 23. ठीक है, सो इट बिकम 48. ये 48 बन गया. ठीक है, और 76 में से मैंने 23 माइनस किया, कितना रह गया 53. ठीक है, सो करंट वेट इज 43, रिमेनिंग वेट इज 53. ठीक है, सो करंट वेट इज 43, रिमेनिंग वेट इज 53 इनफैक्ट, और सॉरी रिक्वायर्ड वेट इज 50. ठीक है, इंक्लूड फिफ्थ वेट. मैंने बोला कि मैं पांचवा वेट भी ऐड करूं. ठीक है, जब मैंने पांचवा वेट ऐड किया ये बन गया 73, ग्रेटर देन 50. अगेन आई कैन इंक्लूड इट. इसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा. इसका मतलब जब मैं वेट 1, वेट 2 और वेट 4 तक था वो 48 था. जब मैंने वेट 5 ऐड किया वो 73 बन गया, जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, सो वेट 5 भी मैंने निकाल दिया, वेट 3 भी निकाल दिया, वेट 4 भी निकाल दिया. दोनों मैंने ऐड नहीं किए. ठीक है, मैंने बोला कि W2 के बाद W3 भी ना लो, W4 भी ना लो. ठीक है, और आफ्टर W2 लेट्स गो फॉर W5. ठीक है, वेट 5 लो. जब तक मैं W2 पे था मेरा वेट क्या था 25 सॉरी. ठीक है, तो यहाँ में सिर्फ 98 में से W3 माइनस हो गया. ठीक है, 76 में से W4 भी माइनस हो गया. ठीक है, अब मेरे पास करंट वेट क्या है 25, रिक्वायर्ड वेट क्या है 50. मेरे पास कितना वेट पड़ा अभी तक सेट में 53, एंड आई सिलेक्ट द वेट फिफ्थ. पंद्रवा वेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, दैट इज 25. आई एड 25 टू 25, इट इज इक्वल टू 50. 50 के बराबर आ गया. मेरा रिक्वायर्ड वेट कितना था 50. ठीक है, रिक्वायर्ड वेट कितना था 50 के बराबर आ गया. इट मींस मेरा एक सेट तैयार हो गया. ठीक है, माय वन सेट इज रेडी. सो यू कैन सी my one set is ready. What that set is W1, W2 and W5. ठीक है, so my the subset will be subset will be W1 comma
W2, W5, ठीक है। जब मैं ये तीन सेट को ऐड करूंगा अपने सबसेट में, इन तीन वेट्स को, ठीक है, आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ इट। In this way, I can find the answer of my solution, that in this pattern, I can get the result of it. ठीक है। So my subset will be, if my subset is of W1 weight, W2 weight and W5 weight, so मैं आगे करूँगा, मेरे पास मेरा equal to 50 weight बराबर आ गया। So अगर आप देखोगे the state space tree में, what I have drawn, W1 is added, that is 1. W2 is added, again it is added to my subset. W3 is 0, 30 means मैंने इसको ऐड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया। W4 is 0, again इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। So using the state based tree, I can easily find which element I have included and which element I have excluded, ठीक है। And when I added the weight W5, so weight in my subset is 50. मेरे weight में weight कितना रहेगा, 50, that is equal to required weight. That is equivalent to required weight. It means this is the required weight, and my subset will be of weight W1, W2 and W5. If this pattern I will use, अगर ये pattern मैं use करूँगा W1 plus W2 plus W5, जो required weight है 50, वो 50 के equal आ जाएगा, ठीक है। So I stop over here, ठीक है। Again I try to find some more subset, और subset find करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप देखिए तो यू सी ओवर हियर, अगर आप ये इसको देखें तो अगर हम ऐड करें, जैसे हमने 5, 20, 25 को ऐड किया, वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। अगर हम 20 प्लस 5 प्लस 25 करें, वो भी रिजल्ट बन जाएगा। इफ आई ऐड 23 प्लस 22 प्लस 5, ये भी बन जाएगा, ठीक है। इफ आई ऐड 22 एंड 28, ये 50 के बराबर आ जाएगा। सो वी कैन गेट मैन रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है। सो मेरे पास के रिजल्ट आ जाएंगे टू फाइंड द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टू गेट द maximum number of subset from a set that equal to the required weight, ठीक है। समझ लगी कैसे बनाना है इसको, और शुड आई रिपीट इट अगेन? हाँ जी। So just write this question in your copies if you have right now. अगर आपके पास कॉपी पेन है तो इसको आप नोट कर लीजिए, और what you have to do is you have to find the subset of this subset so that the maximum result will be required weight will be 30. टोटल करें आप सबसेट के एलिमेंट्स को, वो 30 निकले, ठीक है। So you have to use the same concept over here, ठीक है। Start making the state space tree, ठीक है। स्टेट स्पेस ट्री बननी शुरू कीजिए, ठीक है। ऐड फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। देन ऐड W2, देन ऐड W3। जब मैंने W4 ऐड किया तो वो 70 से आगे चला गया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो W4 को भी कर दिया, W3 को भी कर दिया। यू कैन सी W3 रिजेक्टेड, W4 रिजेक्टेड, ठीक है। W3 का वेट कितना था, 22, W4 कितना था, 23। So this become total of 45। so मैंने 90 जब इसमें से निकाला 45, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 53। 98 में से मैंने 45 निकाल देना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 53, बिकॉज W3 is excluded and W4 is excluded, ठीक है। एंड व्हेन आई ऐड W5, जब मैंने W5 ऐड किया, दैट इज 25, ठीक है। तो इसमें जब मैं ऐड करूंगा 25 को, सो व्हाट आई गेट, सो करंट वेट इज, आई राइट ओवर हियर 25, ठीक है। करंट वेट 25 है, रिक्वायर्ड वेट क्या है, 50। सो करंट वेट 25, रिक्वायर्ड 50। जब इसमें 25 में फिर ऐड करूंगा, ठीक है, आई विल गेट 50 ओवर हियर, ठीक है। सो दिस टू बिकम 25, W5 was 25, I get the result this one,
ठीक है. So this is a various technique patterns. So आप लिख सकते हैं कि next subset can be next subset 2. There can be, let's say, 5, 22, 23. So it is also equal to 50. ठीक है. Next subset 3 can be, let's say, can you see any other subset starting from 5? ठीक है. जो subset 1 था, right over here, subset 1 was W1 5, W2 was 20, and W5 was 25. एक ये हो गया था. ठीक है. And 22, 28 can be one more subset. ठीक है. Subset 4, any other subset that is equal to 50. और क्या लगे नजर आ रहा आपको कोई और सबसेट? 25, 20 हो गया. 20, 40 हो गया. 23. I think 3 subsets are there. मेरे ख्याल से तीन बनते हैं. अगर आप देख लो कि और बनते हो तो. So we can mention the number of subset that will fulfill the condition. तो मेरे हिसाब से अगर हम ये 3 सबसेट हमारे तैयार होते हैं तो ठीक है. ठीक है. So there are 3 subset we can create that fulfill the condition of 50 weightage. ठीक है. इन तीनों को अगर हम वेट करेंगे वो क्या आएगा? 50 आएगा. So in this way we can calculate the number of subset that we can create that fulfill the condition. ठीक है. हाँ जी. Anyone having any problem so far? Or she can ask. जिसको ना समझ लगी वो पूछ सकता है. हाँ जी. Anyone? That's great. Okay. Then let's go for the polling 3. देखते हैं आपको how much you understand for it. ठीक है. Try to give the answer of it. Shall the student participate? Participate. Try to give the answer. Read question carefully, then answer carefully. Select a solution and give the answer.
whatever option you feel that is accurate as per the question, select it. कौन सी आपको लगती है ऑप्शन की क्वेश्चन के आधार से ठीक है, just select it and submit it. Okay then. Thank you. I'm going to finish in just 5 minutes, 5 seconds. If anyone want to give the answer, he or she can give. Okay, then. Thank you very much. So if the sum of subset, if n is size of input and sum is addition of all elements in input, then the complexity of the subset will be n order of n into sum. n into sum, n multipliable sum. Okay. Let's 5. This is all options are very nearly attached to each other. बड़े ध्यान से इसको क्वेश्चन को पढ़िए. इसको पढ़ने के बाद then try to give the answer of it. ठीक है. Let's see. Okay. And close it now. Just okay. This is the last poll for now of this topic, for the topic regarding the sum of subset. Okay.
Read question carefully, read options carefully, then give the answer. Again telling you, read the question carefully, read the answer carefully, then select the option and submit it. So we have done n queen problem, we have done sum of subset right now, and we have done Hamiltonian circuit also. So which of the following can be solved by backtracking problem? Just give the answer of it. Okay, last 10 seconds. Okay, thank you. So I'm going to close it now. Okay, backtracking is used in NQueen also. Backtracking is used in sum of subset also, and backtracking also using Hamiltonian. So the backtracking is used in all of the above. Okay. So write this question on your copy, that we're having a set S with 6 numbers 5, 10, 12, 13, 15, 18, and we have to make a subset of all these elements in a set in such a way that the addition of elements of the subset is equal to 30. So हमने इस तरह से कुछ stress based treat तैयार करनी है, through which we can find the subset in which the addition of numbers is equal to 30. Clear? Anyone? So we are left with nearly half an hour. So I think that this branch and this assignment problem we will do in the next lecture. Okay? We will wait for it. And if you want to repeat this topic once again, or the problem once again, the example once again, we can go for it again. हाँ जी, स्टूडेंट अप्लाई फॉर इट. अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप बोलिए, हम दोबारा कर लेते हैं. अगर समझ आएगी तभी तो आप उसका जो एग्जांपल मैंने दिया, आप यू कैन सॉल्व इट. ठीक है ना? सो आई गिव यू वन मोर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ठीक है, हमारे पास वेट है. वेट क्या है? 5, 20, 22, 23, 25, 28. 6 एलिमेंट है हमारे सेट में. हमें सबसेट तैयार करना है इन 6 एलिमेंट्स का इस तरीके से कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसेट में, that should be equal to 50. ठीक है? So total weight of the element in set is 123. ठीक है? जो रूट नोड होगा, जो हमारा स्टेट बेस्ड ट्री बनेगी, उसका जो रूट नोड है, so this root node we mentioned as 0 and 0,123. 0 means that no element so far is added in our subset. हमारे subset में अभी तक कोई भी element add नहीं हुआ, and the total weight is 123. that अभी तक हमने total weight में से कोई भी weight use नहीं किया. ठीक है? W1 means weight 1. weight 1 क्या है? 5. first element is 5. we represent as W1 equal to 1. it means I have included it into my subset. मैंने उसको अपने subset में include कर लिया. ठीक है? so it become 5. 5 को मैं reduce कर दूंगा 123 में से, रह गया 118. ठीक है? so now current weight is 5, required weight is 50. ठीक है?
इंक्लूड सेकंड वेट W2 इन द करंट वेट W1। मैंने W2 को जब ऐड किया W1 में, ठीक है, व्हाट आई फाइंड दैट कि W1 क्या था 5, ठीक है, W2 क्या 20, ठीक है, जब दोनों को ऐड किया क्या रिजल्ट आ गया 25, ठीक है। 5 को तो मैं ऑलरेडी टोटल वेट से माइनस कर दिया था मैंने, वो 118 आ गया। और 20 को मैं रिड्यूस कर दूंगा टोटल वेट से, रिमेनिंग वेट से। सो व्हेन आई रिड्यूस 20 फ्रॉम 118, I left with how much 98, okay। 25 वेट मैंने यूटिलाइज कर दिया टोटल वेट में, टोटल वेट में से। और जो 25 मैं माइनस करूंगा 1 2 3 में से, आई लेफ्ट विद 98, ठीक है। स्टिल माय रिक्वायर्ड वेट इज 50। currently my weight in my stack is 25 because I'm having 5 and 20, ठीक है। current weight is 25, required weight is 50, include third weight, that is W3 is equal to 22 into my current weight, that is W1 and W2। जब मैंने इसको ऐड किया W3 को, W3 is 22, ठीक है, W3 is 22, so 25 plus 22 is 47, ठीक है। 47 is the weight when I include W3। जब मैंने 22 को ऐड किया तो 47 क्या हो गया, इसका वेट बन गया, ठीक है। स्टिल 47 is less than this what you say total weight, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको एक दो मोर स्लाइड्स ऐड करके इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आई विल टेल यू हाउ। आई पेस्ट ओवर हियर, ठीक है। सो W5 यहाँ पे क्या देखा कि W4 जब हमने ऐड किया तो ये क्या बन गया 70, ठीक है। सो इट इज ग्रेटर देन 50 if the sum of previous weight and the current weight is greater than M, 50 stop and try another weight। मैं वहीं पर स्टॉप कर दूंगा, ठीक है, तो आगे जाऊंगा ही नहीं मैं। सो आई विल नॉट गो फॉर टू W5 W6, मैं W5 W6 तक जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आगे नंबर इससे ज्यादा है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे आके जब 70 वेट हो गया तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो आई विल नॉट गो फर्दर, तो I'll stop over here, ठीक है। सो मैंने देखा कि W3 के बाद जब मैंने W4 ऐड किया वो 70 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब W5 की तो ऑप्शन सोचने की जरूरत ही नहीं है, आई कैन नॉट टेक W5 आल्सो, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, मैंने देखा कि W3 के बाद मैं कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा तो उसका वेट 50 से आगे बढ़ जाएगा। W3 के पास कोई भी एलिमेंट ऐड करूंगा उसका वेट क्या है 50 से आगे चला जाएगा। सो व्हाट आई डू इज आई रिजेक्टेड W3, मैंने W3 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आई एक्सक्लूडेड W3, W3 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि मुझे मालूम था W3 के बाद किसी को भी ऐड करूंगा उसका फायदा कोई नहीं, ठीक है। सो 47 के बाद मैं कुछ भी ऐड करूंगा, 40 W3 की वैल्यू क्या है 22। इसका मतलब क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट एलिमेंट 22 से ज्यादा ही होगी ना, उसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। सो मैं W4 पर गया ही नहीं, मैंने W3 तक काम रोक दिया और आई सेट कि आई एम गोइंग टू रिजेक्ट W3, मैंने W3 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब W3 को रिजेक्ट किया, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या रह गया W1 और W2 रह गया मेरे सबसेट में, ठीक है, दैट इज 25, ठीक है। W3 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर लिया मतलब जो मेन वेट है उसमें से W3 निकाल लिया मैंने, ठीक है। सो 22 को मैंने मेन वेट से निकाल लिया, इट बिकम 76, मगर मैंने इसको यूज नहीं किया, ठीक है। सो W1, W2 and W3 all three values are being subtracted from total weight। जो कौन सी तीन वैल्यू हैं तीनों को मैंने टोटल वेट से माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर मेरे सब सेट में क्या है W1 और W2 ही है क्योंकि W3 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, आई हैव एक्सक्लूडेड W3, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। सो अगर W3 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, मैं बोलता हूँ ओके लेट्स टेक W4, ठीक है। हो सकता है कि 25 में W4 ऐड करूँ तो वो 50 के बराबर आ जाए। जब मैंने W4 किया 23, ठीक है, 25 में जब 23 ऐड किया वो 48 बन गया,
तो again I check that if I add W5 also वो भी exceed कर जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है. So what I do is I excluded W4 also, I exclude W3 also, दोनों को निकाल दिया मैंने, ठीक है. Again मेरे पास करंट वेट क्या है 25, ठीक है. एंड रिमेनिंग क्या वेट रह गया मेरे पास 53, ठीक है. नेक्स्ट टर्न किसी की है, नेक्स्ट टर्न है 25 की, W5 की, ठीक है. जब मैंने W5 ऐड किया, किस में ऐड किया, W1 और W2 में, क्योंकि W3 और W4 मैंने कर दिया था रिजेक्ट, दोनों रिजेक्ट हो गए क्योंकि दोनों को जब मैं ऐड करूंगा द वैल्यू विल एक्सीड 50, ठीक है. आई सेड लेट्स चेक W5 इन W1 एंड W2. जब मैंने W5 को ऐड किया W1 W2 में, what I found 25 is equal to 25. Sorry, 25 plus 25 that become 50 is equal to 50. ठीक है. So W5 वेट क्या है 25, करंट वेट क्या है 25, दोनों को ऐड किया कितना बन गया 50, रिक्वायर्ड वेट कितना है 50, ठीक है. इसका मतलब करंटली जो वेट है मेरे सबसेट में वो 50 है, जो कि रिक्वायर्ड वेट के बराबर है. मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं मेरे को, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को. आई स्टॉप ओवर देयर, ठीक है. आई स्टॉप ओवर देयर. व्हाट आई डू इज आई मेक माय फर्स्ट सबसेट, that my first subset is W1, W2, W5. W1 is 5, W2 is 20, W3 is 25. अब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, I will get the result 50, ठीक है. Now I see that is there any other set, क्या कि और सेट नजर आ रहा है, ठीक है. Again I go back to फिर मैं W4 को रिजेक्ट कर दूंगा, W3 को भी कर दूंगा, W2 को भी कर दूंगा, ठीक है. फिर मैं W1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. सो आई ऐड, मैंने कहा मैं W2 नहीं लूंगा, अब मैं W2 नहीं लूंगा, W3 लूंगा, जो कि अब W2 वाला मैंने देख लिया बन के आता है, ठीक है. सो जब ऐसे ही करूंगा तो मैं देखूंगा मेरे पास एक और सबसेट बन रहा है, दैट इज 5 + 22 + 23. इन तीनों करूंगा तो मेरे पास फिर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है. सो इन दिस वे आई विल फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट in such a way that the elements of subset is equal to 50. Okay, so मैंने prompt देखा कि these three are subset, possible subset, maximum subset that I get from the set in which the total of elements of subset is equal to 25. One subset is still missing. हाँ, एक subset और सकता है, subset 4. One subset is also there. That's right, fine right now. It is which one? ठीक है, हो गया वो 5, 20, 25. 23. ठीक है, all these ones here, no note is there, ठीक है. So these are the subset that can be created from the set. That are the 3 subsets. So I can easily find that the maximum number of subset that I can create from the set are 3. And the pattern is 5, 20, 25 is the first subset, 5, 22, 23 second subset, and 22 and 28 is the third subset. और यहाँ subset बनता नहीं है, इसके elements को मैं अगर ऐड करूँ तो वो इसका sum 50 बन जाए, ठीक है. So in this way try to solve the problem. The problem is this one, ठीक है. Just write the problem in your page, a copy page में लिख लो ये problem ये वाली, ठीक है, so that you can find the solution of it, okay. I think you understand the concept of sum of problem, okay. So in the next lecture we will discuss the assignment problem, okay, and we'll discuss how it will work, why we use the assignment problem, okay. So that is quite enough for today. If anyone want to ask any question regarding today's topic, he or she can ask. Hanji, anyone?
Okay, there's one query over here. Okay, no sir, that's good, great. So I hope you understand this concept. Okay, so just write this problem and try to draw the state-based tree diagram also. Okay, अगर साथ में state-based tree diagram ना होगी तो it will be easy for you to find the pattern and easy for you to understand which node we have included, which we have excluded. And after finding just one subset, write other subset as such. जैसे मैंने यहाँ पे एक subset मैंने find कर लिया था, that is the subset 1. I explain the pattern of subset 1 and just write the other subset in such a pattern. No need to explain that one in such a way. So just write other subset also and mention that the maximum number of subset that can be created from the set can be this number of subsets. So I can say that maximum three number of subset can be created from the set S that fulfill the condition that addition of elements of subset is 50. Okay. Okay, then everyone, take care of yourself. Always keep on washing your hand. Okay. Whenever you go outside for any work, always wear the mask. Okay, very sensitive time right now. अपना ध्यान रखो, घर वालों को ध्यान रखो, ठीक है, and कोशिश करो बाहर से कुछ मत खाना. So everyone take care. Then see you by the next week with a new topic, and try to जितना भी होता है उतनी कवर करो. Update your assignment. ठीक है, try to maximum answers of the question assignment. जितना आंसर आपको मिलती है उतने बनाओ, जितनी बनती है उतनी बनाओ assignment. Whenever we do go for the next topic, and if that topic is in your assignment, then add it to it. So the submission of assignment will be after the next lecture, because the next lecture is also in assignment. जब तक हम next lecture लगाएंगे इनकी assignment submission भी नहीं कर सकते, ठीक है. So try to write the assignment with your own hands, और कोशिश कीजिए कि किसी की assignment copy मत कीजिए, ठीक है. It is difficult for you for the final examinations. आप खुद करोगे तो concept भी समझ आएगा, ठीक है. Concept समझ आएगा तो भूलेगा भी नहीं, ठीक है. So because the data analysis and design of analysis algorithm is little bit tricky subject, क्योंकि इसमें mostly puzzles ही आएंगी आपको, theoretical part इसमें कमी है. So I wish you best of luck, take care, and see you for the next week then. So I'm going to close the meeting right now, and I hope all of you understand the current topic. And if anyone want to ask anything, he or she can ask, or either I end the meeting. I just wait for 1 or 2 minutes. Anyone who want to leave, he or she can leave, and after 2 minutes I will close the meeting then. Thank you very much.